Human rights and the United Nations Charter. ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट मानवता की जड़ों में गहराई से जुड़ा हुआ है। ये वह अधिकार है जो हर इंसान को केवल इस वजह से मिलते हैं कि वह इंसान है। These rights ensure that every individual is treated with dignity, fairness and equality, regardless of race, gender, nationality or religion. United Nations Charter ने human rights को एक global framework में शामिल कर उन्हें international importance दी है। What are human rights? Human rights वे बुनियादी अधिकार हैं जो हर इंसान को समान रूप से मिलते हैं। These rights are universal, inalienable and interdependent. Universal का मतलब है कि ये सभी लोगों पर लागू होते हैं। Inalienable का मतलब है कि इन अधिकारों को किसी व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता। Interdependent का मतलब है कि एक अधिकार दूसरे से जुड़ा हुआ है। Types of human rights. 1. Civil and political rights, नागरिक और राजनीतिक अधिकार. Right to life, liberty and security, freedom of speech, religion and movement. 2. Economic, social and cultural rights, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, right to work, education and health, adequate standard of living. 3. Collective rights, right to self-determination, environmental and developmental rights. The role of the United Nations in promoting human rights. What is the United Nations Charter? United Nations Charter ये वह treaty है जिसने 1945 में United Nations UN की स्थापना की। यह international law का foundational document है। इस charter में human rights को explicitly शामिल किया गया है जो UN के core objectives में से एक है। Key human rights provisions in the UN Charter. 1. Prastavna. The preamble states the UN's commitment to reaffirm faith in fundamental human rights in the dignity and worth of the human person. 2. Article 1 establishes the promotion of respect for human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion as one of the primary purposes of the UN. 3. Article 55 and 56. These articles emphasize international cooperation to promote higher standards of living, full employment and universal respect for human rights. Our human rights bodies under the UN, United Nations ने कई institutions और mechanisms बनाए हैं जो human rights को monitor और protect करते हैं. 1. Office of the High Commissioner for Human Rights, OHCHR. ये body UN की human rights activities को coordinate करती है और worldwide violations की निगरानी करती है. 2. Human Rights Council, established in 2006, ये एक intergovernmental body है जो human rights के promotion और protection पर focus करता है. 3. Treaty bodies. ये committees ensure करती है कि countries international human rights treaties को लागू करें. United Nations and the Universal Declaration of Human Rights, UDHR. 1948 मैंने Universal Declaration of Human Rights, UDHR को adopt किया, जो human rights का पहला और सबसे महत्वपूर्ण global document है. Key features of the UDHR. 1. Comprehensive framework, व्यापक ढांचा. It includes civil, political, economic, social and cultural rights. 2. Non-binding yet influential. Although it is not legally binding, the UDHR has inspired many national constitutions, laws and international treaties. 3. 30 articles. UDHR के 30 articles हर इंसान के लिए dignity or freedom को define करते हैं. Article 1. All human beings are born free and equal in dignity and rights. Article 3. Everyone has the right to life, liberty and security. Evaluation of human rights under the UN. 1. Successes. Global awareness, वैश्विक जागरूकता. UN ने human rights को global stage पर लाने में बड़ी भूमिका निभाई. Conflict resolution, संघर्ष समाधान. Human rights frameworks ने South Africa और racial segregation जैसी समस्याओं को खत्म करने में मदद की. International treaties, Convention on the Rights of the Child, children के rights को safeguard करने के लिए. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, gender equality के लिए. Enforcement issue की समस्याएं, UN legally binding power नहीं रखता, member states को केवल recommendations दे सकता है. Political interference, राजनीतिक हस्तक्षेप, कई बार powerful nations human rights violations को नजरअंदाज करती हैं. Conflicts and wars, संघर्ष और युद्ध. सीरिया और यमन जैसे क्षेत्रों में ongoing conflicts human rights frameworks को कमजोर करते हैं.
टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन के युग में नए ह्यूमन राइट्स एंड द यूनाइटेड नेशंस चार्टर ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट